Good morning everyone. Welcome to the session. I think I'm live now. Yeah. So welcome once again all of you to the XAT practice session 4. We have done 3 sessions already before on this channel. So if you're new to the class, do join and watch the previous sessions also. We have taken up 7-8 questions in each session and we try to discuss what concepts are being asked as a part of the previous year question. Okay. So in these sessions, mostly we are taking previous year questions and we're trying to see that okay how these questions can be like solved. Just a second. Okay. Now a lot of you would be also preparing for other exams like let's say SNAP or NMAT or IFTB there again. You may not have started solving that previous year questions or maybe some of you would have already started solving that previous year questions. What I'll advise is even if you're giving multiple exams, prepare for all exams simultaneously. Not like 1 week for each exam and the exams are very different from each other. Syllabus to same ही है and the level of questions and the pattern of the exam will just be different, but your concept revision and practice for all exams more or less is kind of same. ठीक है, अगर एक चैप्टर में LOD 1 कर रहे हैं for one particular exam, maybe LOD 2 for some other exam, but chapter तो वही है, concept तो वही है. So that is why focus on all exams. That के point of view से थोड़ा decision making try and be ready for this beforehand, so you get some time to think about it. कहाँ गलत हो रहा है, क्यों गलत हो रहा है, because it's a thinking process. Okay, of course there are techniques to solve decision making questions, but then again it's a thinking process. The technique should take some time to sink in. When I'm learning a new technique, it should take some time to sink in. Okay, this is how it is solved. ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है. The management of time in such exams. कितना time कौन से section को देना चाहिए? Which is the section I'm solving first? And उसमें is it working for me? और वहाँ पे is it something wrong and I'm not able to manage time better? So maybe I should start with this section the next time. So what works for you? तो उसको figure out करने के लिए थोड़ा time लगता है. So that is why don't wait till all exams are over and then you will start preparing for that in a week or so. वैसा मत करो क्योंकि it's a big exam and it's something which provides a great opportunity. क्योंकि एक exam में you can really do well even if your CAT has gone wrong. You can really do well in that. 1/3 of the paper is decision making. QA के साथ DI add होके है. So you can compensate for your lack of skills in any one section. And similarly VRC के साथ LR है. So that gives a great opportunity for a lot of you जिनका थोड़ा थोड़ा कौन सा section weak है, तो you can balance it out. Sectional cutoffs clear करना is more convenient and you can really score well in this exam if you think properly. And time का constant है नहीं, you will definitely find it more convenient to solve. Okay, चलो let us begin. Just a brief background of mine, you can get my profile detail on the description link of the video, so you can follow my profile on the Unacademy platform and join me for my special and plus classes. Unacademy का ये 2023 के लिए फाउंडेशन टेस्ट जो है 11th टुमारो, ये कल फाउंडेशन टेस्ट है, बट उसके लिए मैराथन चल रहा है. तो December 9th, yesterday there was a marathon 3 to 9 p.m. 6 hours non-stop marathon for CAT 2023. क्योंकि जो एग्जाम दोगे उसको लेके उसका बेसिक्स लेके थोड़ा मैराथन में कॉन्सेप्ट्स आर बीइंग डिस्कस सो दैट व्हेन यू गिव द एग्जाम यू फाइंड इट इजियर. टुडे आल्सो वी हैव द मैराथन 6 hours का December 10th 3 p.m. to 9 p.m. again. So if you are a 23 aspirant and you are giving the foundation test, do attend this marathon so that it becomes easier for you to compete and score well. You get exciting prizes and scholarships and everything, discounts on your subscription. So do join. फ्री फॉर ऑल यूट्यूब में ही होगा, तो डू ज्वाइन एंड अटेंड द मैराथन. ठीक है, जो 2023 एस्पिरेंट्स हैं. Let us start. Let us start again some previous year questions to start with today. We'll try and see how to solve them. The coordinate geometry said this question is: people attending live do like the session and please feel free to interact on the chat section if you are attending this live. 5 points are given. Okay, 5 points are given.
and उनका coordinates are given A, B. Initially, it might look like a difficult question, but it's a very easy question. Very easy question. C, D, and E. But if you skip coordinate geometry altogether, then you may not be able to solve this. 5 points are given. What is happening is every second the points are changing or they're moving. कैसे move कर रहे हैं? By having their abscissas. Abscissa का मतलब है x coordinate and doubling their ordinates. Ordinate का मतलब है y coordinate. That means every second x coordinate becomes by 2. फिर और एक सेकंड चला गया, फिर by 4 हो गया, फिर और एक सेकंड के बाद by 8 and so on. It goes on like this. हाफ होता जा रहा है एवरी सेकंड जो जितना भी कोऑर्डिनेट है उसका हाफ हो गया एक्स कोऑर्डिनेट, अगेन हाफ, अगेन हाफ, अगेन हाफ, every second, and the y coordinate is getting doubled. So 2y, then it becomes 4y, then it becomes 8y, and then so on. Just think about this. Every second you are doing this, and you will do it for 500 years. Okay, try and imagine the scale of it. 500 years तक तुम अगर करोगे ये चीज, तो आई कैन से एक्स कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे ज्यादा कुछ बड़े नहीं है. 7 को 5-6 बार हाफ करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग में आ जाएगा. ओके, 3-4 बार में आ जाएगा. 10 को वैसे 3-4 बार में, तो एनी टाइम इनको 3-4 मैक्सिमम लेट से 5 टाइम्स में, in 5 seconds all of these will be 0 point something. Now if I keep doing this for 500 years, so imagine the number of times you would have done this. तो उसमें I can easily say, okay, by that logic my x coordinate सबका in all these points, सबका x coordinate is approximately 0 now, approximately 0, somewhere close to 0. नेगेटिव साइड में हो, पॉजिटिव साइड में, बट आई कैन ऑलमोस्ट टेक देम एज 0 बिकॉज वो वैल्यू का कुछ सिग्निफिकेंस रहेगा नहीं. 0.00000, it doesn't have any significance now, it's almost 0, but the y coordinate will have some value. ठीक है, y coordinate का वैल्यू रहेगा because y coordinate डबल होता जा रहा है, तो every second it's increasing by value. What is it that we're trying to find? Which 2 points are closest at the end of 500 years? Now if you look at the distance formula, distance between any 2 points is calculated in this way: x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 whole square का square root. When you carefully look at this formula, x2 minus x1 whole square, after 500 years when I'm taking any 2 points, this becomes 0. Because सबका x coordinate is almost 0, so there is no significant difference in x coordinates. तो x2 minus x1 component तो 0 हो गया. तो जो भी difference आएगा, it is due to the difference in the y coordinates. So basically, if I want the points to be close, so their y coordinates का difference should not be that high. Or I can say the points which are closest in the beginning will be the closest at the end. क्योंकि जो beginning से ही far apart है, उनका डिस्टेंस और बढ़ता जाएगा बिकॉज उनका y कोऑर्डिनेट और भी फार अपार्ट होते जा रहे हैं. तो जो सबसे क्लोजेस्ट बिगिनिंग पे थे वही रिलेटिवली क्लोज एंड में रहेंगे. बाकी जो बिगिनिंग में सबसे दूर है y कोऑर्डिनेट वाइज, वो एंड में और भी दूर हो जाएंगे. तो विच 2 पॉइंट्स आर क्लोजेस्ट इन द बिगिनिंग y कोऑर्डिनेट वाइज? इट इज पॉइंट A एंड C, क्योंकि 3-4 कंसेक्यूटिव नंबर्स. तो ऐसे देखोगे तो पता नहीं लगेगा कि ओके ये कैसे हो सकता है, बट लॉजिक समझ रहे हो. जिनका y कोऑर्डिनेट is the closest in the beginning, those 2 points will be the closest at the end, and the x coordinate really doesn't matter because it is almost 0. So my answer is A, C, option E. Hope this is clear to all. Very basic question, just with an understanding of coordinate geometry. Coordinate geometry का ज़्यादा कुछ application नहीं, simple distance formula ही use हो रहा है. Not like it's some critical concept of coordinate geometry being applied. Previous question ही था ये, and I hope all of you are able to understand कैसे solve हुआ. ठीक है, let's proceed to the next one. It's a very easy question. XAT 2013 का ये question है. बोल रहा है in an examination there are 30 questions. 1 mark. It's a very simple question. 1 mark is given for each correct answer, and 0.25 is deducted for every incorrect answer. Ankur attempted all the questions and scored 13.75. How many questions did he answer incorrectly?
I'll take let X questions were answered correctly and Y questions were answered incorrectly. X questions were answered correctly and Y questions were answered incorrectly. यही दो चीजें हो रहा है, या तो करेक्टली आंसर कर रहे हो, नहीं तो इनकरेक्टली आंसर कर रहे हो. So I can write X plus Y is equal to the total number of questions, which is 30, equation 1. And when I look at it in terms of marks, X correct attempts के लिए 1 mark for each correct attempt, so X marks, minus 0.25 for each wrong attempt, so 0.25 into Y, this is equal to 13.75. Now which is the variable that the question is asking? How many incorrectly? That means Y का value निकालना है, तो X को eliminate कर लो. Subtract both the equations. You get 1.25y is equal to 16.25. So y is equal to 16.25 by 1.25. 16.25 I can write it as 65 by 4 and this is like 5 by 4. So I can say okay, y is equal to 13. None of the above. Very easy question. Okay. ऐसा लग सकता है ये कैसे आ सकता है एग्जाम में, बट समटाइम्स इन द मिक्स ऑफ क्वेश्चंस यू कैन फाइंड अ वेरी इजी क्वेश्चन. ऐसा नहीं है कि डिफिकल्ट सारे क्वेश्चंस डिफिकल्ट होंगे. दिस इज लाइक अ वेरी रॉन्ग अजम्पशन पीपल कैरी इन द माइंड दैट एग्जाम में इजी क्वेश्चन नहीं आता. ओके, इवन इफ यू शो देम एन इजी क्वेश्चन, समहाउ दे थिंक कि एक चैप्टर में जो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है वही सब कैट में जैट में आता है. ऐसा कुछ भी नहीं. And people get excited if the questions are easy and they get demoralized if the questions are difficult in some exam. How does it matter? If you practically think, does it actually matter? If the questions are easy, then it's easy for every candidate applying the exam, so automatically the cutoff goes up. Common sense. Common sense. Everyone will solve that question. So to score high or to get a good percentile, you have to solve more number of questions. And if the exam is difficult, it's difficult for everyone. So if you just solve the bare minimum number of questions, it's going to be better for you. So either ways, it's challenging. Either ways. So तुम्हें कौन सा टाइप का एग्जाम सूट करता है? If you are someone who is not very efficient in solving critical questions, but you are extremely good at solving basic questions, extremely good. कोई भी चैप्टर का बेसिक क्वेश्चन दिया तो you are very fast in solving, speed है, but ठीक है थोड़ा अप्लाई करने में तुम्हें दिक्कत होता है, you don't have much practice, but fundamental clarity and you can solve basic questions very fast. So maybe SNAP and MAT exams are very convenient for you. MSCT, CMAT ये सब exams में you can really crack. That doesn't mean तुम CAT and XAT ये सब crack नहीं कर सकते. I'm not saying that. But these exams you'll find it convenient and तब तुम्हें exciting लगना चाहिए because questions are easy. But if you're someone who don't have very high speed in solving, but you are someone who can really think about the questions, application तुम्हारा बहुत strong है in concepts. So you don't have to worry about speed. And especially that is the exam for you if you are that kind of a person. You are not worried about speed, but तुम्हें पता है कि मैं 2-3 मिनट एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ तो I can solve this. दो लोग कर रहे होगे, you can relate to what I'm saying. So don't get too much carried away even if the questions are difficult or even if the questions are easy. Focus on the task that मुझे इतने questions करने हैं, इतने marks लाने हैं. How do I do it? How do I do it? Which are the questions I can solve? How do I select better? How do I not waste my time in unnecessary lengthy questions? And how do I manage my time efficiently across the sections so that I get a good score? That should be your target. Don't even think for 1 second question easy था, difficult था, जो भी था. Any exam I am giving, any set of questions are being asked, वो set of questions में सबसे easy questions मुझे करने हैं. If I'm doing that, that means I am giving the exam efficiently. अगर 22 क्वेश्चंस कैट में थे तो उसमें से अगर 12 क्वेश्चंस इजी थे, डिड आई सॉल्व ऑल दोस 12 क्वेश्चंस? इफ यू वुड हैव डन दैट तो तुम्हारा 99 परसेंटाइल एनीवेज आ रहा होता. अगर एग्जैक्ट में दे रहे हो सपोज 25-26 क्वेश्चंस में से 18 क्वांट्स क्वेश्चन है एंड 18 क्वांट्स क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चंस वर इजी and then another 6 were moderate, another 6 were difficult. So the 6 easy questions, did you do that? If you have done that, you will not find it difficult to clear the cutoffs anyway. You will definitely clear the cutoffs. So that's the correct way of giving exam. The correct way of giving the exam is not like I'm good in algebra, so I tried all algebra questions, but geometry मुझे अच्छा नहीं लगता तो मैंने geometry किया नहीं, and arithmetic is my strong area, but वहां से ज्यादा question आया नहीं,
So if we think in those lines and then the exam goes wrong, so we can only blame ourselves. समझ रहे हो? तो over dependence on any chapter or biasness for any chapter of not solving those questions will like it can horribly go wrong for you in the exam. And understand this, you get one chance. You get one chance. Anything goes wrong, again you have to prepare for the next year. And it's not like if I have 5 exams and I can crack any one of it if one of the exam goes wrong. Of course you can, but provided your preparation is correct. Preparation is correct. So think correctly. These exams are not very difficult to crack. Trust me on this. If your approach to the exam is correct, you will crack any one of this for sure. एक एग्जाम खराब हो गया तो क्या हो गया, और भी 4 एग्जाम्स है, 5 एग्जाम्स है. You will definitely crack one of the exams if your approach to the exam is correct. Think about that part. ठीक है? Okay, let's go to the next one. Mungeri Lal has 2 investment plans, A and B, to choose from. So there are 2 plans, A and B. Plan A offers interest of 10% compounded annually, whereas Plan B offers interest of 12% per annum. That means ये simple interest है, ठीक है? So Plan A compound interest का है, Plan B simple interest का है. So till how many years is Plan B a better investment? So we will be using the concept of ERR. ठीक है? ERR, effective rate of return. That means if I am investing for a particular number of years, मेरा overall return क्या है? मैं हर साल का return calculate कर सकता हूँ और मैं बोल सकता हूँ 3 साल में overall इतना मिला. That overall thing is ERR. So in case of SI, calculating ERR is very easy. Simple rate of interest into time period. Every year 12%. So 1 year में 12%, 2 year में 24%, 3 year में 36%, 4 year में 48% and so on. But if you calculate in CI में ERR का थोड़ा calculation is done in this way. It is 1 plus R by 100 to the power n minus 1 into 100. This is how ERR is calculated in case of compound interest. You can check this formula or else तुम 100 लेके calculate करके percentage निकाल सकते हो. But if you know the formula, it is better. Now think about this. First year, year 1. Compound interest में I get a 10% return, simple interest में I get a 12% return. So obviously simple interest is better. Till how many years is simple interest better? वही पूछा है question में. If I go to the second year, compound interest will now be 21%. It's not 20%, 21%. Simple interest is 24%. It is still better. If you go to year 3, compound interest will be 33.1%. You can use this formula directly. And simple interest is 36%. Still simple interest is better. You go to year 4, compound interest is like 46.41%. 14641 to 46.41%. 46.41% and simple interest is 48%. So simple interest is still better. If you go to year 5, simple interest is now 60%. But compound interest कितना आएगा? If you calculate 10% rate of interest है तो 1.1 to the power 5 अगर तुम लेते हो 1.61 आ रहा है. -1 करोगे तो 61.05% आ रहा है. तो 1.15 years तक लो, 1.1 to the power 5. So here I am seeing that okay, starting from year 5, compound interest is now better. Because better या less better ये कैसे बोलते हैं? Based on like कितना return तुम्हें मिल रहा है. तो 4 years तक simple interest was giving you a higher return. But beyond 4 years, it is the compound interest which gives you the higher return. So till how many years is Plan B a better investment? Till 4 years. Such fundamental question. Yes or no? Think about this. People attending live, do like the session and subscribe to the Unacademy CAT-alyst channel if you're new. Okay, I hope this is clear. Very very basic question. बहुत लोगों को ये already पता होगा. If you don't know the formula for ERR for CI, I have written this formula. You can refer to this. Overall return, compound interest में मैं 3 साल invest किया at a certain rate of interest. 3 साल में कितना return आया overall? Okay. Hope this is clear. Basic question again.
Let's take a look at this one. Previous that question again. A salesman sells two kinds of trousers, cotton and woolen. A pair of cotton trousers is sold at 30% profit, and a pair of woolen trousers is sold at 50% profit. Okay. The salesman has calculated that if he sells 100% more, what do you mean by 100% more? 100% more मतलब double. 100% more किसी का मतलब double होना. 100% more woolen trousers than cotton trousers. His overall profit will be 45%. ठीक है. However, he ends up selling 50% more cotton trousers than woolen trousers. 50% more means 1.5 times. So what will be his overall profit? Good question. So I'll take like this. Let cost of cotton trouser let it be C and a woolen trouser जो है let it be W. ये उनका cost price let us say. So case 1, let's see it in this way. The salesman calculate क्या किया वो, अगर 100% more woolen trousers than cotton trousers, तो जितना cotton खरीद रहा है उसका double, जितना cotton sell करेगा उसका double अगर woolen sell करेगा. That means I'll say let one cotton trouser वो sell कर रहा है, one cotton and double उसका woolen, तो one cotton and two woolen. ठीक है. So what is the total cost price? Total cost price is C plus 2W. What is the total selling price? Cotton trouser is sold at a 30% profit. So 1.3C हो गया. And a woolen trouser is sold at a 50% profit. So 1.5W. So 1.3 plus 1.3C plus 3W हो गया. And what is the overall profit? Overall profit will be 45%. That means I can write selling price मुझे ऐसा एक मिला 1.3C plus 3W. This is equal to 1.45 times the total cost price which is C plus 2W. क्योंकि total cost price पे 45% profit लेंगे तो भी selling price आएगा, isn't it? So 1.3C and this is 3W minus 0.9. So I get 0.1W is equal to 0.15C. और I get 2W is equal to 3C. एक हमें रिलेशन मिल गया बिटवीन W एंड C. 2W is equal to 3C. Very simple calculation I have done. इंडिविजुअल एंटिटीज पे मैंने प्रॉफिट डाल के टोटल सेलिंग प्राइस निकाला एंड टोटल कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट डाल के फिर टोटल सेलिंग प्राइस निकाला एंड देन इक्वेटेड बोथ. लेट्स गो टू द नेक्स्ट केस, केस 2. केस 2 मतलब ये जो कैलकुलेशन करना है अभी. हाउएवर ही एंड्स अप सेलिंग 50% मोर कॉटन ट्राउजर देन वुलन ट्राउजर, 1.5 टाइम्स. तो आई टेक फिर सेल क्या हुआ, लेट अस से 2 वुलन ट्राउजर एंड 50% मोर, तो इसका 1.5 टाइम्स, तो 3 कॉटन ट्राउजर. लेट अस से ही सोल्ड दिस. So what is the total cost price? 2 woolen plus 3 cotton. Okay, and I got 2 woolen is equal to 3 cotton. So basically I can say it is like या तो मैं 4 woolen ले सकता हूँ in place of, ये relation याद रखो, 2 woolen is equal to 3 cotton हमें मिला है. Convert everything to cotton or else convert everything to woolen. Selling price देख लेते हैं, उस हिसाब से convert करेंगे. What will be the total selling price? वही प्रॉफिट में वो सेल करेगा. So 2 woolen he will sell at a 50% profit and 3 cotton he will sell at a 30% profit. तो ये आ जाता है 3W plus 3.9C. ओके, तो बेटर एवरीथिंग हमें C में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो यहाँ पे 2W is equal to 3C, तो 3C plus 3C, टोटल सेलिंग प्राइस इज 6C. इन टर्म्स ऑफ कॉटन मैंने कन्वर्ट कर लिया. ये तो 3.9C है. दिस 3W फ्रॉम दिस रिलेशन, अगर 2W 3C है, if 2W is equal to 3C, this implies 3W will be 4.5C. 1.5 टाइम्स ज्यादा हो रहा है. So I can write 4.5C plus 3.9C. So 4.5 plus 3.9 is basically like 8.4C total selling price. Hence profit कितना आता है? 2.4C.
and profit percentage 2.4C upon 6C into 100, 40%. Is this making sense? We could have done this using allegation also. Multiple ways to solve questions, whichever way suits you. All right. I hope this makes sense. Very basic, easy question. But हाँ, carefully question को पढ़ना है. Profit loss का ही question है, but it's not very easy to solve. इतना ऐसा नहीं कि बहुत ही obvious सा question है and ऐसे ही solve हो जाएगा, but not very difficult also. Take a good amount of time in reading questions. Whenever you are solving the question in the exam, have a calm head. Take good amount of time in reading and understanding को क्या दिया है, क्या पूछ रहा है, कैसे calculate कर सकते हैं. Very important, very important. It solves half the question that way if you understand the question better. Sometimes जल्दी जल्दी में हम क्वेश्चन पढ़ना ही सही नहीं करते, गलत पढ़ते हैं, गलत इंटरप्रेट करते हैं एंड फिर गलत वे में स्टार्ट कर लेते हैं, और एल्स बहुत ही सिंपल है, गलत डिसीजन ले लेते हैं, करेंगे या नहीं करेंगे. वहां से ही तो स्टार्ट होगा. इफ आई ट्राई द क्वेश्चन फॉर 4 minutes, नहीं हुआ, देन आई गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, तो टाइम ही वेस्ट हुआ वहां पे. What if I could have saved those 4 minutes पहले 10 seconds में? If I would have read the question correct and mind में approach frame करता, and then I would have realized no, this is going to be lengthy. I can do this, but I shouldn't waste 4 minutes, 5 minutes in this. Maybe I can try the next one. So that's a more matured and a smart way of giving the exam, rather than trying every question or trying the areas you like and जबरदस्ती कर रहे हो. Again, these are subjective things. Exactly इसको बोल नहीं सकते. Suppose I like an area, but I am really good at it. उसमें कोई भी क्वेश्चन है मैं कर सकता हूँ, no problem in that. But if you are good at it, it doesn't mean you take 7 minutes to solve. It should be 2 minutes to solve. But it should be that good. And वो that good जो हम बोलते हैं, someone is very good in a chapter, वो होता कैसे है? Immense amount of practice, lot of practice, different variety of questions should have practiced, and you are really good means तुम 9 out of 10 times you are able to solve questions really fast. तब जाके तुम्हारा वो कॉन्फिडेंस रहेगा कि नहीं, डजंट मैटर इजी या डिफिकल्ट, मैं तो कर सकता हूँ. इन दैट केस यू आर अबव द डिफिकल्टी इजी गेम. तुम्हें कोई भी क्वेश्चन देगा तुम कर सकते हो, बट दैट कैन नॉट हैपन फॉर ऑल चैप्टर्स. देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस जिनका सब चैप्टर वैसे इक्वली अच्छा होता है. इफ यू आर वन ऑफ देम, वेरी गुड. बट अगर तुम कोई चैप्टर में बहुत अच्छे हो, कोई चैप्टर में थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हो, कीप इट अ नॉर्मल गेम फॉर यू. इफ इट इज फ्रॉम योर स्ट्रेंथ एरिया एंड यू कैन सॉल्व, formulate the approach in the first 10-15 seconds, then make a call, should I do this or not. पूरा clueless होके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे एंड देन सोचेंगे देखते हैं आगे जाके होता है नहीं होता है. दैट्स रॉन्ग वे ऑफ गिविंग द एग्जाम. ठीक है. ऑलराइट, लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन. CSC का क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन अगेन. Rajesh walks to and fro to a shopping mall. He spends 30 minutes shopping. If he walks at a speed of 10 kilometers per hour, he returns home at 1900 आवर्स में 7 PM. तो इस शॉपिंग मॉल से होम आ रहा है, वो कितना डिस्टेंस हमें पता नहीं, बट वो घर पहुंच रहा है 7 PM को, 1900 आवर्स. If he walks at 15 kilometers an hour, he returns home at 6:30. An interesting situation. Think about this. Let us say this distance is d. I know distance is speed into time. So let us say उसका initial speed is 10 kilometers per hour. So speed from 10 kilometers per hour, when it increases to 15 kilometers per hour, I can say it's a 50% increase, or speed has become 3/2 times of itself. Now think about this. अगर मैं speed को 3/2 times of itself कर रहा हूँ and time is constant, time has to become 2/3 times of itself so that ये constant रहे. Speed has become 3/2 times, so time has become 2/3 times. So there is a reduction in time. What is the reduction in time? Time from t has become 2/3t, so the reduction in time is t/3, which is given as he reaches 7 PM में, ये 6:30 PM में अभी पहुंच गया, 30 minutes save हुआ. That means t is like 90 minutes or 1.5 hours. Now I can get distance also.
क्योंकि 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड में अगर 1.5 आवर्स ले रहा है तो डिस्टेंस एक्चुअली शॉपिंग मॉल से उसके घर का डिस्टेंस इज 15 किलोमीटर एंड उसको 90 मिनट्स लग रहा है। दैट मीन्स वो स्टार्ट कब कर रहा है, सोचो 7 बजे पहुंच रहा है 90 मिनट्स लेके, दैट मीन्स ही मस्ट बी स्टार्टिंग एट 5:30 PM। अभी मिल गया हमको सारा डेटा, समझ रहे हो कैसे स्टार्ट किया। डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, स्पीड बढ़ा तो टाइम कम होगा, कितना कम हुआ ना, t/3 विच इन द क्वेश्चन इज गिवन एज 30 मिनट्स। क्योंकि 7 PM को पहुंच रहा था, नाउ ही इज रीचिंग एट 6:30, तो 30 मिनट्स सेव हो। तो टोटल टाइम ही यूजुअली टेक्स इज 90 मिनट्स। यूजुअली मतलब 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड में उसको 90 मिनट्स लग रहा है। तो 90 मिनट्स लेके 7 PM को पहुंच रहा है, मतलब ही मस्ट बी स्टार्टिंग एट 5:30 एंड द डिस्टेंस इज 5 किलोमीटर। नाउ इफ ही वांट्स टू रीच एट 6:15, तो अवेलेबल टाइम उसके पास कितना है, 45 मिनट्स, विच इज लाइक 3/4 ऑफ एन आवर। तो व्हाट शुड बी स्पीड, 15/3/4, तो स्पीड मस्ट बी 20 किलोमीटर पर आवर। तो none of the above. You should walk at a speed of 20 kilometers per hour to reach on time. Okay. Hope this is clear to everyone. Let us see this one. This is a very good question on numbers, and this one is a little tough. Polynomial numbers दोनों का application है इसमें. fx is a fourth order polynomial with integer coefficients with no common factor. The roots of fx, यहाँ पे roots दे दिया है, -2, -1, 1 and 2. So from the roots I can create the polynomial in this way. It is x plus 2 into x plus 1 into x minus 1 into x minus 2. Now if p is a prime number greater than 97, p is equal to a prime number greater than 97, then the largest integer that f of p that divides f of p for all values of p. ये थोड़ा समझ लो क्या है, f of x का वैल्यू इतना है तो f of p का भी वैल्यू आएगा कुछ। f of p मतलब basically in place of x I'll put p plus 2, p plus 1, p minus 1 and p minus 2. I got the value of f of p. Now once you know f of p, largest integer that divides f of p for all values of p, that means ये p का यहाँ पे वेरिएबल में है, p एक्चुअली तो प्राइम नंबर है, तो उसका कुछ एक वैल्यू पुट करोगे तो एट द एंड यू विल गेट अ नंबर। व्हाट इज द लार्जेस्ट इंटीजर दैट कैन डिवाइड ऑल दैट, दैट मीन्स ऑल सच वैल्यूज ऑफ f of p का HCF, वही पूछ रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए वी जस्ट नीड टू स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ एनी प्राइम नंबर p कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 6k plus minus 1 except 2 and 3। तुम कोई भी प्राइम नंबर लो, उसको या तो 6k plus 1 में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नहीं तो 6k minus 1 फॉर्म में रिप्रेजेंट कर। तो पहला केस लेके देखते हैं। आई नो f of p is like p plus 2 into p plus 1, p minus 1 and p minus 2, एंड p का वैल्यू मैं केस 1 में लेता हूं। लेट अस से p is equal to 6k plus 1। तो हाउ मच इज f of p ना, यहाँ पे पुट करो, 6k plus 1 plus 2 plus 3 हो गया, 6k plus 2 then 6k and then 6k minus 1। Then what I'll do is from here I'll take a 3 common, here I'll take a 2 common and यहाँ से 6 common, तो 3 into 2 into 6, 36 common आ गया, तो k 3 common गया था तो 2k plus 1, 2 common गया था तो 3k plus 1 and then 6k minus 1। One thing is for sure that f of p is definitely divisible by 36, या तो 36 से होगा, नहीं तो any higher multiple of 36। तो from this 120 and 240 तो straight away reject, क्योंकि f of p में 36 always रहेगा। अब k का वैल्यू सोचो, सपोज आई हैव टेकन k as something like this। मान लो तुम k को ऐसा कुछ लियो और p is greater than 97, तो 6k plus 1 is greater than 97, that means 6k is greater than 96,
और k शुड बी ग्रेटर देन 16। तो मान लो k को 17 लेते हैं, तो आई गेट 36 इंटू 17 इंटू 35 इंटू 52 इंटू 101। तो यहाँ पे 35 एंड 52 से एक 10 आ जाएगा, तो आई कैन से इट इज डिविजिबल बाय 360। मैं k को और एक वैल्यू लेता हूँ, k को मान लो मैं 18 लेता हूँ। 36 2 इंटू 18 प्लस 1 37, देन 55, देन 107 एंड k तो 18 पुट करेंगे, तो ये 55 एंड 18 में एक 10 आ जाएगा। फिर से आई कैन से इट इज डिविजिबल बाय 360। तो यहाँ पे क्या पैटर्न आ रहा है कि एवरी टाइम यू टेक एनी वैल्यू ऑफ k, इट इज डिविजिबल बाय 360 आ रहा है। ओके, बट डोंट टेक k एज 19, k इज नॉट इक्वल टू 19, क्योंकि प्राइम भी चेक करना है, क्योंकि k 19 यहाँ पे पुट करो, 6 into 19 plus 1, you're getting 115. This is not a prime number. Sometimes people check this and say कि ये तो satisfy नहीं कर रहा है, ये 17 18 हो रहा है, 19 नहीं होगा, फिर 20 में हो सकता है, 20 भी नहीं हो रहा है, क्योंकि 6 into 20 plus 1 121 आ रहा है, not prime, 21 maybe, and so on. So I'm seeing that okay, f of p is definitely divisible by 360. तो यहाँ पे जैसे 6 के प्लस 1 में आया, सिमिलरली 6 के माइनस 1 में भी सेम केस आएगा। आई एम नॉट डूइंग दैट, बट यू कैन कंक्लूड दिस सेम पैटर्न में। 6 के प्लस 1 में जैसा हो रहा है 360 एवरी टाइम, 6 के माइनस 1 लेके एफ ऑफ पी में पुट करके अगेन स्टार्ट पुटिंग वैल्यू ऑफ के, यू गेट द सेम थिंग। ओके, सो ये अप्रोच फिगर आउट करना थोड़ा लेंदी हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग यू शुड बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन द एग्जाम। कर पा रहे हो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हो नो वरीज, ट्राई एंड अंडरस्टैंड, लर्न फ्रॉम एवरी क्वेश्चन, यू नेवर नो कहाँ पे यूज हो जाए। ठीक है, so it's a good question, previous that question था ये। Hope this is clear to all of you. Let us see this one. Two poles of heights 2 meters and 3 meters. So there is a pole 2 meter height का and there's a pole 3 meters height. They are 5 meters apart. The height of the point of intersection of the lines, तो ऐसे lines हम join करेंगे। तो क्वेश्चन में AB का हाइट दिया है 3 meters, CD is like 5 meters, sorry 3 meters 2 meters, AB 2 है and CD 3 है। So height of the point of intersection of the lines joining the top of each to the bottom of each, तो PQ का हाइट पूछा है मुझे। इसका एक डायरेक्ट शॉर्टकट है, वी कैन सॉल्व दिस यूजिंग सिमिलैरिटी। तुम लोग किए भी होगे इसको सिमिलैरिटी में सॉल्व। शॉर्टकट इज आई कैन राइट PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ द हार्मोनिक मीन ऑफ AB एंड CD डायरेक्ट। तो PQ इज इक्वल टू 3 into 2 by 3 plus 2, तो 6 by 5 1.2 मीटर है, सीधा सीधा हाफ ऑफ द हार्मोनिक मीन। ये जो हाफ ऑफ द हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर्स, ये फॉर्मूला बहुत जगह पे यूज होता है। अगर दो नंबर ए बी है तो इनका हार्मोनिक मीन इज लाइक 2AB by A plus B। तो हाफ ऑफ हार्मोनिक मीन मीन्स AB by A plus B, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स बाय सम ऑफ द टू नंबर्स, हाफ ऑफ द हार्मोनिक मीन। बहुत जगह पे यूज होता है ये फॉर्मूला, टाइम एंड वर्क में भी यूज हो सकता है, टाइम स्पीड डिस्टेंस में भी यूज हो सकता है। इट्स नॉट द फॉर्मूला दैट यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट्स एप्लीकेशन। तो डायरेक्टली ये तुम 1.2 मीटर बोल सकते हो। नहीं तो अगर ये नहीं पता है, वी कैन सॉल्व दिस यूजिंग सिमिलैरिटी। राइट एंगल ट्रायंगल, ये सारे राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं। एक बार ये ए बी सी को पी क्यू सी के साथ सिमिलर कर लो, एंड एक बार डी सी बी को पी क्यू बी के साथ सिमिलर कर लो, एंड सिमिलैरिटी में इजीली आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो, मैं सिमिलैरिटी में भी सॉल्व कर दे रहा हूँ, ऑल्टरनेट मेथड।
I can write triangle ABC is similar to triangle PQC. Angle similarity. ABC, PQC. So I can write AB by PQ is equal to BC by QC. BC by QC. Similarly, I can write triangle DCB, DCB, PQB is similar to triangle PQB. So you can write DC by PQ is equal to CB by QB. तो यहाँ पे इनका थोड़ा वैल्यूज लिख लेते हैं. AB है 2, so 2 by PQ is BC is 5 by QC, and this is 3 by PQ is equal to 5 by QB. तो इन दोनों का रेसिप्रोकल करके ऐड करो. That means if I write QC by 5 plus QB by 5 is equal to PQ by 3 plus PQ by 2. So this becomes QC plus QB by 5 is equal to PQ. I can take common 3 into 2 by 3 plus 2. देख रहे हो कहाँ से फॉर्मूला ओरिजिनेट हो रहा है. And this itself is 5. So I can write PQ is equal to 3 into 2 by 3 plus 2. 1.2. This is using similarity. वो तो similarity करके end में जहाँ पे पहुंचेंगे this part वही हो रहा है यहाँ पे. Harmonic mean half of harmonic. If you know this, 10-second question, not more than that. Okay. So I hope all of you are getting an idea how to solve this. These are all previous year XAT questions. It's not about the questions. You think on the questions. Whenever you are solving any question, think on it. क्या दिया है, कैसे दिया है, ऐसे हुआ है, वैसे क्यों नहीं हुआ, मैं अगर ऐसा कर रहा था कहाँ गलत जा रहा है. You have to think. Okay, it's not just a task to complete all previous year questions. You have to think, get involved in the questions, understand what is the expectation of the exam. Again, put it into use while you're giving the mocks. Strategize कि मेरा कहाँ पे स्कोर आएगा, कैसे आएगा. If you are a thinking person, you will figure out. You will figure out. Okay? खुद सोचना पड़ेगा. We are there to help. Will of course give you advice, but I want all of you to be thinking. खुद सोचो कहाँ गलत जा रहा है, मेरा स्ट्रेंथ क्या है, मेरा वीकनेस कहाँ है, मैं कहाँ पे स्कोर कर सकता हूँ, कहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, कहाँ पे मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ. And all these things you have to analyze yourself. Okay. And of course, any help you need, we are always there to give you advice, give you tips, and अपने side से जो भी inputs will always try and provide. But then that introspection part has to be done from your end. These are the questions for this session. Hope you guys understood these questions and understood the approach कैसे solve, and it gave you some insights of how to solve these questions. So this is an announcement for the Goal Scorer Batch 2023 December 15 को start हो रहा है. So you can use my code and join this batch taking a subscription. These are the USPs of the batch. So any 2023 aspirant, if you're watching, you can join by taking a subscription and you'll get a 10% discount. Then ये final lab for IFT, XAT and CMAT एक batch December 3rd को start हुआ था. So if you're planning for CMAT and all exams, you can join this batch by taking a subscription. Don't forget to use my code and you get a 10% discount. These are the plus and iconic features. So compare these features and depending on your requirement, you can decide which subscription you want to take. So that is it from my end for this session. Thank you all for joining and hope you guys like the class. Do like the session, share it with your friends and subscribe to the Unacademy CAT-alyst channel. This is session number 4, so 3 sessions are already done. So please watch them also. And we'll meet again in another session. Tomorrow we have an algebra practice of a XAT exam. So if you guys are free, do join the session. You can check the session link on the channel itself. And notification में on कर देना, तो whenever I come live tomorrow, you will get a notification. कल सुबह है class. So till then, keep solving, keep practicing. Thank you guys, all of you, for joining, and have a nice day. Bye bye.